जी, recursive functions mean function that calls themselves to solve a particular problem can only solve a base case. So means we will have a problem, we will break down that problem into smaller problems till we achieve the base case. Because in recursion, termination is done when the base case is achieved. If we just compare it with iteration means in looping, in simple looping, termination means loop का break होती है when the condition is false. So comparing it with recursion कब break होती है when we achieve the base case. So we'll try to discuss the problem over here and try to understand the concept of recursion. So if it is not the base case, what step we have to follow? Break the problem into smaller pieces. Further break it down. Launch a new copy of function and work on the smaller pieces. Now this is all textbook knowledge. We have to convert it over here for the sake of our understanding, and then we will go relate what we have written. Problem, the smaller problem, recursive call and recursive step, we can call it as well, slowly converges towards the base case. Now let's have an example of factorial, 5 factorial. Can we write it as 5 into 4 factorial? Can we write 4 factorial equals to 4 into 3 factorial? Can we write 3 factorial equals to 3 into 2 factorial? एक base case है, we have defined that 1 factorial equals to 0 factorial equals to 1. This is the base case. We have this problem, we are breaking it down into smaller pieces or components. 2 factorial equals to 2 into? Is it the base case? 2 into 1. क्या आंसर है? Plug it over here. 3 into 2 equals to? Plug it over here. 4 into 6 equals to? 5 into 24 equals to? This is how problem gets solved. And this is actually recursion. आपने किस चीज का फंक्शन बनाया? फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. उसने इसको ब्रेक किया. उसने 4 का फिर फैक्टोरियल, 3 का फिर फैक्टोरियल, 2, 1. So launch a new copy of function to work on smaller. We have launched a new copy of function over here to work on smaller compared to the bigger problem. Slowly converges towards the base case. You can see the convergence. Function makes call to itself inside the return statement. Means function is calling itself. There is a single function named as recursion which is taking an integer argument. Eventually, base case gets solved in front of you. When base case gets solved, what is the last process? Answer works back up to solve the entire problem. This is how answer is working back up to solve the problem. So this is the core concept of recursion. You can just understand this. This is what is happening in the background. ये में भी आपको ऑफ कोर्स कोड की फॉर्म में नजर नहीं आएगा. कोड में जस्ट फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा होगा. But this is actually the recursive steps we need to understand. So factorial की बात हो रही है, इसकी generic form n factorial n into n minus 1 till 1. 5 factorial equal to 5 into 4. We have just discussed till it reaches the base case. इसको जरा हम इसमें करते हैं. Now definitely इंटीजर्स पे बात नहीं रहेगी. हायर डेटा टाइप ऑफ इंट, लॉन्ग, ओनली पॉजिटिव साइड पे, अनसाइंड लॉन्ग. फैक्टोरियल फंक्शन आपने बनाया जो कि एक इंटीजर लेगा, आप ये समझ लें, ठीक है. ये हायर डेटा टाइप ऑफ इंटीजर है और एक इंटीजर ही रिटर्न करेगा.
लेट्स स्टार्ट द मेन में हम कह रहे हैं कि पहले 10 नंबर्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट करें. मेन इज वेरी सिंपल, इट्स समराइजिंग व्हाट वी वांट टू डू. हमने एक लूप लगाई, वी हैव डिप्यूटेड अ लूप स्टार्टिंग फ्रॉम 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ 0. फैक्टोरियल ऑफ 0 पे फंक्शन कॉल हुआ फैक्टोरियल विद द वैल्यू. क्या वैल्यू है जी? क्या वैल्यू रिसीव हुई है नंबर पे? 0. वी हैव डिप्लॉयड द बेस केस. इफ 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, so this is how we have written. If number is less than or equal to 1, return. तो क्या रिटर्न हो जाएगा जी? 1. सो 0 पर तो सिंपल 1 रिटर्न होकर डिस्प्ले हो गया. 1 नेक्स्ट लूप चली, दोबारा फंक्शन कॉल हुआ सेकंड टाइम, क्या रिसीव हुआ? 1 फैक्टोरियल क्या है? 1. इन बोथ द केसेस बेस केस हैज वर्कड. नाउ कम्स 2. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. एल्स पे आ जाए. Isn't this a problem? Return 2 cross factorial of 2 minus 1. But we have to write it this way. Generic form is of n into n minus 1. 2 cross number cross factorial of 2 minus 1. यहाँ पे कॉल होगा factorial. The same function will be called with what value? लॉजिकली तो 1 वैल्यू वापस आके क्या यहाँ पर प्लग इन होगी 1. 2 + 1 क्या रिटर्न होगा अल्टीमेटली? जब तक आप ये नहीं सामने रखेंगे डायरेक्टली ये चीज समझ नहीं आती. लेट्स से इन केस ऑफ 5 फैक्टोरियल 2 में तो ये हो गया. व्हाट इज द केस इन 3 into 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल पे कॉल होगा, 2 फैक्टोरियल पे फर्दर 2 into 1 फैक्टोरियल कॉल होगा. It's embedded, it nested function calls. Another way of understanding is this problem is using this. वो आपको नेक्स्ट एग्जांपल में मैं बताता हूँ. एक ट्री भी आप बना के कर सकते हैं. तो यह बहरहाल आप देख लें. This is how the number is exponentially increasing in case of factorial. तो 5 फैक्टोरियल 120 किस तरह कंप्यूट हुआ? किस तरह? कोड कितना सा है? जस्ट एक लाइन है, बट बैकग्राउंड पे प्रोसेसिंग कितनी है? बहुत ज्यादा. दैट्स व्हाई इट्स हैवी. दैट्स व्हाई इट्स स्मार्टर लुकिंग. गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच, बट नॉट कंप्यूटेशनली इकोनॉमिकल. वन हमारी रिक्वायरमेंट होती है ट्रेड ऑफ. वो डिपेंड्स करता है क्लाइंट पे कि टाइम जितना मर्जी ले लें, परफॉर्मेंस अच्छी हो. मेमोरी जितनी मर्जी लें, टाइम कम हो. टाइम जितना मर्जी ले लें, परफॉर्मेंस अच्छी. हाँ ऑफ कोर्स टाइम वेरी. परफॉर्मेंस अगर आपको इन टर्म्स ऑफ बिग ओ नोटेशंस आपको मेमोरी की इतनी वो चीज़ नहीं है, आप समझ रहे हैं, तो इट माइट टेक टाइम एज वेल क्योंकि कॉम्पिटिशनली हैवी है, बट इज लुकिंग स्मार्टर. जेनेरिक फॉर्म को इम्प्लीमेंट कर देती है. whenever there is a call, function call, recursive call, it's definitely heavy on system resources. Another example to clarify our concept of Fibonacci series, in which the next number is the sum of previous two, isn't it? ये आपको सीरीज आ गई है जिसकी जेनेरिक फॉर्म है Fibonacci of any number equals to Fibonacci of last two numbers and add them up. There is the base case. Fibonacci of 0 है 1 है, return 0 है तो 0, 1 है तो ये इसका बेस केस है. Else Fibonacci of 3 क्या होगा? Fibonacci of 2 plus Fibonacci of ये इसकी जेनेरिक है.
अब ये किस तरह इंप्लीमेंट होगा? Very simply can be understood with this simple tree. Fibonacci of 3 is summation of previous two numbers 2 and 1, isn't it? Fibonacci of 1 is 1. Fibonacci of 2 is summation of previous two numbers 1 and 0. Now we have reached the leaves, the base cases. 1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे 1. 1 plus 1. 1 plus 1. Fibonacci of 3. Got the point? This is how we have solved it. तो ट्री सा बन जाता है. ट्री के आगे फर्दर 3 पे 2 और 1 और 2 फर्दर आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर ले इसी तरह. You just need to understand that tree. Okay. Now let's discuss this. Unsigned long, the same heavy on processing. Unsigned long, result and number. Enter a number. We have got the number. Result equals to Fibonacci of that number. So from line number 20, whatever number we have entered, the control will go to line number 30. If it's 0 or 1, return the corresponding 0 and 1 respectively. If it is neither 0 nor 1, it is 2. Then return Fibonacci of 2 minus 1. क्या आ गया? And Fibonacci of 2 minus 2. ग्राफ देख लें. Fibonacci of 2 किस तरह कंप्यूट हुआ है? 2 minus 1, 2 minus 2. Fibonacci of 2 is 1. So over here we have the base case. If it is not a base case, return these and add them up. So simply we can have the Fibonacci. So again a very smarter code, isn't it? A simple if and else is doing the job instead of putting in loops. Loops are heavy on system resources, but recursive function calls are even more heavier. So that's why we have compared which to follow, the looping approach or the calling the function time and time again to solve a particular problem. Of course, not every problem can be solved with recursion. Repetition, explicit loops. Repetition has two forms: looping and function calling themselves. We can exit from both the conditions. If it is looping, condition get fails, we are out of the loop. In recursion, if we have the base case like this over here, so we are out of the recursion. Now next is just the answer way backs up and solve the entire problem. Both might have infinite loops, of course. Now the answer which to follow, it's a trade-off. If you want a balance between performance, it's the looping or the iterative approach. And if you want a good software engineering paradigm, smartly written code, then it's recursion. Both the things are available to us, and we have to select either of these with respect to our constraint and limitations. I hope you have got the idea of recursion now, even better, isn't it, than before.